So hello everyone, my name is Debprosit and I'm currently doing my MBBS from Mains Bhopal and I'm a second year student as of now. So today the topic that we're going to discuss is principle of inheritance and variation. तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली मेंडेलियन जेनेटिक्स को डिस्कस करते हैं एंड हाउ इट इवॉल्व फ्रॉम देयर and इस चैप्टर के एंड में we'll discuss about the genetical disorders, basically the Mendelian genetical disorders and chromosomal disorders. Okay, so in the introduction NCERT ने ऐसे बोला है कि have you ever wondered why an elephant always gives birth to a baby elephant and not some other animal, or why a mango seed comes only from a mango plant and not from other plant? तो इसका मतलब है कि a certain species always gives birth to that same species. Even among the members of a same family, the siblings, they have certain similarities with one another. So ये क्यों होता है? And these kinds of questions are dealt with in the branch of biology that is known as genetics. तो ये इधर बोला गया है कि these and several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology that is known as genetics. तो हम इस जेनेटिक्स की स्टडी करने वाले हैं एंड it was from the 8000 to 1000 BC that these variations, one of the causes of variations that happen among within a species or intra-species or between two different species also. So these variations are somewhere hidden in sexual reproduction. We already knew that, but we didn't have any proof. We didn't have any proof for that, or we didn't have any understanding that how this process happens. Okay, so but using that understanding that sexual reproduction is somewhere related for causing the variation, we had developed different breeds of cows like Sahiwal cows in Punjab. So we are actually using genetics from a long time. मतलब बहुत दिनों से हम लोग जेनेटिक्स यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. एंड इन दिस चैप्टर वी डिस्कस कि हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कैसे करी. तो all of it started with Mendel in the mid Austrian priest Gregor Johann Mendel. तो इन्होंने क्या करा था कि अपने चर्च के बैक में जो एक गार्डन था, उसमें गार्डन पीस को लेके 7 साल तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा फ्रॉम 1856 to 1863. दिस इज इम्पोर्टेंट एंड दे आस्क दिस इन नीट. तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे और इन्होंने कुछ रिजल्ट्स मिले इनको, और उनके बेसिस पे इनने अपने कुछ लॉज दिए जिनको लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है. So, and this was the first time that statistical analysis and mathematics were being used by someone to discuss a problem of biology. तो इनका जो मेथड था वो बहुत ही ज्यादा यूनिक था, and his experiments had a large sampling size. तो जो इनके जो रिजल्ट्स थे उनमें बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी भी थी. ओके, एंड नाउ मेंडल ने क्या करा था कि गार्डन पी प्लांट्स लिए थे एंड ही सिलेक्टेड दोज प्लांट्स व्हिच हैव टू अपोजिंग ट्रेट्स ऑफ ए कैरेक्टर. नाउ यहाँ पे दो टर्म मैंने यूज किया कि कैरेक्टर एंड ट्रेट. तो इनमें डिफरेंस क्या है? कैरेक्टर इज ए फीचर लाइक हाइट एंड ट्रेट इज द expression of that character in terms की height can be tall or height can be short. So tall is a trait and short is also a trait, and the entire thing height, this is a character. तो मेंडल ने क्या करा था कि ऐसे पी प्लांट्स में ऐसे कैरेक्टर को इसने चूज करा फॉर हिज स्टडी जिनमें अपोजिंग ट्रेट्स हो, like height in pea plant has opposing trait tall and dwarf, और इसमें कोई भी इंटरमीडिएट एग्जिस्ट नहीं करता. सिमिलरली इन सीड कलर येलो एंड ग्रीन, ये दोनों अपोजिंग ट्रेट्स है और इनके बीच का कोई कलर एग्जिस्ट नहीं करता इन पी प्लांट्स. तो मेंडल ने ऐसे 7 कैरेक्टर्स लिए
जिनके ऊपर इसने स्टडी करा. So he created true breeding lines of those characters, और total 14 true breeding pea plant varieties इसने select करे. 14 true breeding plants जिनमें 7 थे मेल एंड 7 थे फीमेल. और अब इनमें इसने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करा और टोटल कैरेक्टर कितने लिए थे? 7 कैरेक्टर्स. तो इसका मतलब कि इन 7 फीमेल प्लांट्स में one will be tall, one will be one has yellow seed, one has round seed. तो ऐसे करके टोटल 7 कैरेक्टर्स इसने लिए और 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स के इसने टोटल 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज सिलेक्ट करे. तो इधर बोला भी गया कि 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स एज पेयर्स व्हिच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स. तो जैसा मैंने अभी बोला कि लाइक हाइट और कलर ऑफ सीड और दिस शेप ऑफ सीड. तो टोटल ऐसे 14 प्लांट्स इन पेयर्स इसने सिलेक्ट करे ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, और उसके ऊपर इसने अभी अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट करा. तो इधर एक टर्म मैंने यूज करा कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट. ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स आर दोज which undergoes continuous self pollination. तो continuous self pollination जब होगा then they'll show a stable trait inheritance. मतलब अगर मैं टॉल प्लांट के साथ टॉल प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन करवाऊं, टॉल प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन कराऊं, तो टॉल इनटू टॉल इन दोनों कैरेक्टर्स की जो है पॉलिनेशन होगी. तो इससे हमें जो प्रोजेनी मिलेगा वो टॉल होगा. और ये हम फॉर सेवरल जनरेशन इसको रिपीट करते हैं. एंड आफ्टर रिपीटिंग फॉर सेवरल जनरेशन जो हमें टॉल प्लांट मिलता है ये बिल्कुल प्योर टॉल प्लांट होता है. इसमें कोई हेटेरोजाइगोसिटी नहीं होती, प्योर टॉल प्लांट होता है. तो इस टॉल प्लांट को बोलेंगे हम ट्रू ब्रीडिंग प्लांट. नाउ जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे दैट वर स्टडीड बाय मेंडल इन पी. तो मैंने बोला कि टोटल 7 कैरेक्टर्स थे. सो दीज आर द कैरेक्टर्स: स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप, पॉट कलर, seed shape and seed color, and contrasting traits. These were the contrasting traits, and these were the 7 characters that were selected by Mendel. So total 14 traits means 14 plants, out of which 7 male, 7 female with contrasting traits. Now this was the setup of Mendel. कि उसने सेटअप कैसे करा. तो मेंडल के सेटअप में क्या था कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स उसने सिलेक्ट करा एंड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स उसने सिलेक्ट करा. अब इट वाज टाइम फॉर the inheritance experiments. So first of all, it starts with experiments on only one gene. So what Mendel did was he crossed tall and dwarf pea plant. So like tall, mid, and dwarf. And then after germination, when all the plants germinated, he saw a strange result that all plants were tall, which were offsprings were tall, and no sign of dwarf. तो यहाँ पे एज ए डायग्राम एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन भी करा है कि
how Mendel created female and male and female parents. So इसने emasculation करके मेल प्लांट को फीमेल में कन्वर्ट करा, एंड ही क्रॉस्ड मेल, आई मीन ही सेल्फ पॉलिनेटेड द फीमेल विथ मेल, एंड जो सीड्स मिले उस सीड्स को इसने कलेक्ट करा, फिर जर्मिनेट कराया, देन इसने जो प्लांट्स थे उनको नर्चर करा और प्लांट्स ग्रो करे, एंड एज ए रिजल्ट, and here you can see that the trait that is shown in the diagram is purple or violet and white flower color. So white flower color, this was crossed with violet flower color, और जो रिजल्ट में हमें मिला कि all were violets. And this was the result of F1 generation, means the generation after crossing of the parents. तो इधर बोला है कि filial 1 generation में filial 1 progeny जो और जो F1 generation progenies जो थे, all plants were tall और all plants were violet. तो ऐसे इसको results मिले. अब मेंडल ने क्या करा कि self pollinated the tall F1 plants, and to his surprise he found that filial 2 generation और जो F2 generation थी उसमें some of the offsprings were dwarf. इसका मतलब tall and dwarf को उसने क्रॉस कराया, and he got tall plants in F1 generation, and now he did a cross between 2 tall F1 plants, and the result he got was tall plants and also dwarf plants. मतलब जो dwarf plant apparently गायब हो गया था in F1 generation, वो फिर से F2 generation में reappear हो गया. So that was one of the discovery that Mendel made अपने experiments के through. और इससे ये पता लगता है कि जो characters के होते हैं, character traits did not show any blending. जो कि पहले माना जाता था कि कैरेक्टर्स जो है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे ब्लेंड विथ ईच अदर, एंड द रिजल्ट इज सीन इन द ऑफस्प्रिंग. मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इस ब्लेंडिंग को कैंसिल कर दिया, एंड ही सेड दैट the tall and the dwarf traits were identical to the parent type and did not show any blending. कि F2 generation में हमको फिर से dwarf plants मिल रहे थे, मतलब characters blend नहीं हुए, they were separate from the very beginning. And the proportion, अब यहाँ पे proportion जो आता है 3:1 में इसको मिला था कि जो tall plants and dwarf plants की रेशियो थी इन F2 जनरेशन, उसको मिला 3:1. So that was one thing. तो based on this observation, मेंडल ने क्या बोला कि जो कैरेक्टर्स के जो ट्रेट्स है ये कंट्रोल होते हैं बाय फैक्टर्स, और इन फैक्टर्स को बाद में हम लोगों ने टर्म दिया जीन. So factors or genes are therefore are the units of inheritance which contain the information that is required to express a particular trait. तो किसी ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है फैक्टर के अंदर या फिर जीन के अंदर, और इस जीन के दो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं इन एन इंडिविजुअल जो कि अलग अलग ट्रेट्स को एक्सप्रेस करते हैं, एंड दीज आर नोन एज एलील्स. सो कैरेक्टर हाइट, and here tall and here short. So height gene is one gene. It has a tall allele and a short allele. अगर किसी इंडिविजुअल में tall alleles है, that individual will show
टॉल ट्रेट, और उसकी जो हाइट होगी टॉल होगी. लेकिन अगर किसी में दो शॉर्ट एलील्स हैं, then he will be, or he or she, I mean that individual will be short. तो ये है एलील का कॉन्सेप्ट. और यहाँ पे you can see that the diagrammatic representation of a monohybrid cross, कि मेंडल ने क्या करा था, ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट एंड ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस कराया, एंड इन F1 generation he got all the plants were tall. And when he crossed the one F1 tall plant with another F1 tall plant, he got the results 3 tall plants and 1 dwarf plant. So by this thing he proved that blending does not occur, and these traits were information that were stored in फैक्टर्स. नाउ अब इन फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मेंडल ने एक तरीका अपनाया, फॉर विच ही यूज्ड कैपिटल लेटर्स फॉर वन ट्रेट एंड स्मॉल लेटर फॉर अनदर ट्रेट. अब कैपिटल को उसने डोमिनेंट्स के लिए यूज करा एंड स्मॉल को उसने रिसेसिव के लिए यूज करा. अब डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है? डोमिनेंट वाज द ट्रेट दैट वाज एक्सप्रेस्ड both in homozygous and heterozygous condition, but recessive was the trait which was expressed only in homozygous condition. अब ये चीज थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो इसको फिर से हम समझेंगे कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या है. तो होमोजाइगस is when two same type of alleles are present together. So for the height gene, जैसे हमें पता लगा कि there are two traits or two alleles, one is T and one is small t. Okay, so when TT are present together in a plant, or TT are present together in a plant, it will be termed as homozygous plant. But if one is capital T and another is small t, it will be termed as heterozygous plant. And in the presence of capital T, the small t did not show or did not express its phenotype, which is dwarf. So in plants in which capital T are present, they will always be tall. Doesn't matter if the condition is heterozygous or homozygous. But if capital T is completely absent and both the alleles are small t, only then the plant will show dwarf characteristic. So that is how Mendel determined dominant characters and recessive characters. So the characters which were being expressed in the F1 generation, those were dominant characters, and the other the dominant traits, and the other trait was recessive. So when we are crossing a tall plant with a dwarf plant, we are getting all tall plants in F1 generation. So by this result, it means that tall is a dominant trait, but dwarf is a recessive trait. Okay, and based on this, this was the result of monohybrid cross, and based on this, Mendel gave 2 laws which we'll discuss later. Based on this law was law of dominance, which I'm going to discuss later. Now coming to the next law, what happened is which was based on F2 generation. So what we got in F2 generation
we saw the reappearance. तो ये कैसे हुआ? To explain that, Mendel used the term segregation. और ये ऐसे होता है कि ड्यूरिंग मियोसिस पेरेंट के पास फॉर एग्जांपल मेल पेरेंट के पास, तो एज आई सेड कि अगर हेट्रोजाइगस पेरेंट है, then 50% of the gamete will have capital T and 50% of the gamete will have small t. So there's a 50% chance of gamete containing either alleles. And as I said, ki hybrids have capital T, small t, heterozygous. So that was the thing. Or and this thing is known as segregation. So what is segregation? Ki during meiosis, the two alleles of a character or gene that are present together in parent, they segregate and distribute among two different gamete, and this phenomenon of segregation known as segregation. Segregation just means separation. तो यहाँ पे एलिल्स का सेपरेशन हो रहा है ड्यूरिंग मियोसिस, और इस चीज को हम डिनोट करते हैं बाय पुनेट स्क्वायर. और पुनेट वाज रेजिनाल्ड सी पुनेट वाज अ ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट जिन्होंने इस प्रोसेस को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा इजी बनाया बाय यूजिंग ए स्क्वायर व्हिच इज नोन एज पुनेट स्क्वायर. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हुआ कि when we are making a cross between true breeding tall and true breeding dwarf plant, तो जो ये tall plants में दो gametes form होंगे, both of these will be capital T and capital T, and the dwarf plant will form small t and small t gametes. अब इनका जो है साथ में आएंगे, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर साथ में आ रहा है तो इट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी, and in the next square again capital T and small t they are together, तो tall plant फिर से, and third square फिर से capital T and small t, and the fourth square again capital T and small t. So all the plants in F1 generation they have a genotype of capital T and small t, और इसीलिए इनके जो phenotype है which is tall. अब हमने F1 जनरेशन के दोनों प्लांट्स का क्रॉस कराया. F1 जनरेशन में जो सारे प्लांट्स थे सारे हेट्रोजाइगस थे. अब हमने इसका क्रॉस कराया, तो अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट्स में one gamete will be capital T and the one gamete will be small t in both of these parents. और जो हमें रिजल्ट मिलेगा, तो एज आई सेड कि F2 जनरेशन में अब एक तरफ से स्मॉल टी और से दूसरी तरफ से स्मॉल टी आ गया, तो द जीनोटाइप वी आर हैविंग इज होमोजाइगस स्मॉल टी. ठीक है. सो पुनेट स्क्वायर से हम ऐसे इजीली मोनोहाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, and we can easily calculate the phenotypic ratio and genotypic ratio. अब मैं इस जगह को थोड़ा क्लियर करता हूँ so that we can see better. तो what we are seeing in F2 generation is one homozygous capital T, two heterozygous and another homozygous. तो अब phenotypic ratio, phenotype means the character which we are seeing, which we are observing, which is getting expressed. Phenotype is basically a morphology से समझ सकते हैं. और जीनोटाइप है कि जीन्स जो कि इसके क्रोमोसोम में जो एलील्स है, जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन है, उसको बोलते हैं जीनोटाइप. तो फिनोटाइपिक रेशियो टॉल वर्सेस ड्वार्फ अगर देखें तो टोटल 3 टॉल प्लांट्स है हमारे पास एंड 1 ड्वार्फ प्लांट है. So the ratio will be 3:1. And genotypic ratio अगर देखें तो homozygous tall 1 है, heterozygous 2 है, and
homozygous short is 1. तो capital T 1, capital T small t 2, small t 1. So this is 1 to 1 is the genotypic ratio. और ये दोनों बहुत famous results है in monohybrid cross 3:1 and 1:1, जो याद रखना चाहिए क्योंकि बाद में कैलकुलेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं. And the same thing now. Okay. So यहाँ पे जो बोला है इन्होंने कि 1 out of 4, 1 out of 2 and 1 out of 4 ratio of TTDT has mathematically condensable to the form of binomial expression this, and that has been the gametes of this, and the expression is expanded or given below. तो इसमें क्या बोला कि हमारे पास 50% गैमेट्स कैपिटल टी के आ रहे हैं एंड 50% गैमेट्स स्मॉल टी के आ रहे हैं. ठीक है, तो कैपिटल टी इज दिस, स्मॉल टी इज दिस. ओके, तो अब इसको अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हमें जो इक्वेशन आ रहा है ax प्लस by का स्क्वायर, इससे हम जीनोटिपिक जो रेशियो है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे a इज ए कांस्टेंट, b इज ए कांस्टेंट, x इज ए वेरिएबल एंड y इज ए वेरिएबल. तो हमारे पास वेरिएबल क्या है? वेरिएबल्स आर गैमेट्स एंड कांस्टेंट इज दिस, जो कि गैमेट की रेशियो है. हाफ ऑफ द गैमेट will be dominant and half of the gamete will be recessive. तो half t plus half small t, इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिल रहा है? 1/4 tt, मतलब t इंटू टी लिख रहा हूं, टी स्क्वायर नहीं लिख रहा मैं, प्लस 2/4 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी. और ये कुछ देखा सा लग रहा है कि 1/4 प्लांट्स आर कैपिटल टी, 2 out of 4 plants are capital T small t, and 1 out of 4 plants are small t. So this is giving us the genotypic ratio. तो इन्होंने कुछ नहीं, बस मैथमेटिकली इस चीज को रिप्रेजेंट करा है जो कि यहाँ पूरा इन्होंने समझाया है. ठीक है, एंड दैट इज वेरी बेसिक मैथ्स. नाउ व्हाट हैपेंड इज मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F2 plants and found out that dwarf F2 plants continued to generate dwarf plants. तो मेंडल का एक मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस होता है ना, F2 जनरेशन तक तो खत्म हो जाता है कि पेरेंट्स का क्रॉस कराया, F1 जनरेशन मिला, एंड F1 जनरेशन के बाद हमें F2 जनरेशन जो मिला, मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ तक ही होता है. अब इसके बाद मेंडल थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ऑन F2 प्लांट्स कि उनके जीनोटाइप्स को चेक करने के लिए कि उनके जीनोटाइप्स में क्या है, उन पे थोड़ा स्टडीज कर रहे थे. तो इसीलिए दैट्स व्हाई मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F2 प्लांट्स. अब ड्वार्फ प्लांट्स को जब सेल्फ पॉलिनेट करा तो जो फर्दर जनरेशंस थी सारे के सारे ड्वार्फ थे. सो इससे ये कंक्लूड हुआ कि genotype of the dwarf was homozygous, means small t. That's how Mendel calculated the genotype of dwarf plants. And tall plants की जो genotype है वो कैसे calculate करा? तो उसके लिए Mendel devised a method which is known as test cross. And what is a test cross? Test cross is a cross where the dominant plant, the tall plant from F2 is crossed with a dwarf plant. तो इससे हमें जो टॉल प्लांट है उसकी एक्चुअल जीनोटाइप जो कि टीटी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये पता लग जाएगा. और ये कैसे पता लगेगा? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 टॉल प्लांट्स हैं एंड आई डोंट नो कि विच वन इज होमोजाइगस एंड विच वन इज हेटेरोजाइगस. तो मैं इन दोनों को ड्वार्फ से क्रॉस कराऊंगा.
एंड इफ माई रिजल्ट जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे ये सारे के सारे टॉल है, इट मीन्स कि जो ये टॉल प्लांट थी हमारे पास दैट इज होमोजाइगस। और अगर हमें रिजल्ट ऐसे मिला टॉल रेशियो ड्वार्फ 1:1 में मिला, सो दैट मीन्स कि जो टॉल प्लांट हमारे पास थी दैट वाज एक्चुअली हेट्रोजाइगस। And that's how test cross can tell the genotype of a dominant plant, of a tall plant. And that's how Mendel calculated the genotype of plants. Now, here they have shown a representation of a test cross. तो क्या करा कि this is homozygous recessive, तो this is the कंट्रोल प्लांट फॉर एग्जाम्पल। तो कंट्रोल प्लांट के साथ हम अपने जो टेस्ट प्लांट है उसका क्रॉस करवा रहे। तो एक बार हमने और वी डोंट नो इट्स जीनोटाइप, इट मे बी हेट्रोजाइगस और इट मे बी होमोजाइगस, एंड इफ इट इज होमोजाइगस all flowers will be violet, and if it is heterozygous then half of the flowers are violet and half of the flowers are white, जो कि मैंने अभी बोला, and they have shown it by a Punnett square. तो ऐसे हम टेस्ट क्रॉस को यूज करते हैं to determine the genotype of a plant, to test the genotype of a plant, and that is why it is known as test cross. So based on these experiments जो कि मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स थे, मेंडल ने 2 लॉज दिए। सो फर्स्ट लॉ वाज जो कि मैंने बोला था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, इट वाज बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ही गॉट इन F1 जनरेशन। तो इसमें क्या बोला कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स, and factors occur in pairs, and in a dissimilar pair of factors one member of the pair dominates the other, और उसका phenotype हमें देखने को मिलता है। So in F1 generation we got all tall plants, so tall is dominant over dwarf, and this is law of dominance. And the second law that was given was law of segregation. It was based on the results he got from F2 जनरेशन, कि F2 जनरेशन में मेंडल ने फिर से रिसेसिव ट्रेट की रीअपीयरेंस देखी, एंड आफ्टर सीइंग दैट ही hypothesized that alleles do not show any blending, they remain separate throughout generation. During the process of mitosis, alleles separate into 2 different gametes and they remain separate, और generation to generation ये जो alleles है carry forward होते रहते हैं, and a homozygous parent produces all gametes that is similar. A heterozygous parent produces 2 kinds of gametes, one having one allele, one having dominant allele and one having recessive alleles. और ये जो alleles है generation to generation carry forward होता है without any kind of blending, without any kind of mixing, and that is why we can see the reappearance of recessive trait without any blending signs, without any mixing signs, जो कि बिल्कुल pure recessive trait का था, उसका हमने reappearance देखा F2 generation में. That was because of the law of segregation, कि during meiosis gametes alleles को separate कर देते हैं. So these were the 2 laws that were given by Mendel. Now here we see some exceptions of Mendelian genetics, जो Mendelian genetics को follow नहीं करते. There are some reason, actually ये follow करते हैं but they appear to not follow. So first example is Antirrhinum majus or snapdragon. इसमें flower colors are red and white.
So what happens when we perform a monohybrid cross? Red will form a capital R gamete and white will form a smaller gamete. And the F1 generation, हमें according to Mendelian genetics क्या मिलना चाहिए था? All plants should have been red, but नहीं, हमें मिलता है all plants pink. और अब हम जब pink को cross कराते हैं, then in the F2 generation we get one red plant, two pink plants and one white plant. तो यहाँ पे जो है कैरेक्टर्स की apparently ब्लेंड हो रहे हैं. हमें लग रहा है कि कैरेक्टर्स ब्लेंड हो रहे हैं, फिनोटाइप्स ब्लेंड हो रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली क्यों हो रहा है? क्योंकि कैपिटल आर एंड स्मॉल आर यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन, जो पिगमेंट है वो पूरे अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रहा. आई मीन इन capital R plant, the pigment needed for the red pigment that is being produced, it is in maximum quantity, जिसके लिए हमें प्लांट को जो फ्लावर है वो रेड दिख रहा है. But when one dominant gene is absent, only one dominant gene is making the red pigment, तो हमें less amount of red pigment मिल रहा है. और इससे क्या हो रहा है? जो प्लांट की फ्लावर है हमें पिंक अपीयर हो रही है. एंड द फिनोटाइप जो रेशियो है रेड पिंक व्हाइट की 1:1 है, एंड जीनोटाइप रेशियो 1:1, दैट इज फॉलोइंग द मेंडेलियन जेनेटिक्स. तो दीज टू आर apparently similar. So what is happening? What is this phenomena? This phenomena is known as incomplete dominance. According to incomplete dominance, when in heterozygous condition, the dominant gene cannot completely dominate the recessive gene. मैं फिर से बोल रहा हूँ कि in heterozygous condition, the dominant gene cannot completely dominate the recessive gene. तो इसके लिए जो phenotype है, phenotype में हमें change दिख रहा है, क्योंकि जो जीन की प्रोडक्ट है, डोमिनेंट जीन की प्रोडक्ट है, वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रहा. तो जो फिनोटाइप है वो थोड़ा कम दिख रहा है, जो फिनोटाइप की इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम दिख रही है. एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. और ये हमें देखने को मिलता है इन एंटीरेनम मेजर्स और स्नैपड्रैगन के फ्लावर्स में. ओके, अब इधर इन्होंने बोला कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द कांसेप्ट ऑफ डोमिनेंस. इधर ज्यादा कुछ नहीं है. बेसिकली three things can happen in a recessive allele, or that is the modified allele. तो क्या होता है कि इधर बेसिकली ये बोला गया है कि इनिशियली एवरी जीन, इनके जो दो एलील्स होते हैं उनमें से एक होता है वाइल्ड टाइप और अनमॉडिफाइड, एंड दूसरा होता है मॉडिफाइड. ओके, सो द अनमॉडिफाइड जो एलील्स होते हैं दैट इज डोमिनेंट, और मॉडिफाइड और म्यूटेटेड जो एलील होती है दैट इज रिसेसिव. और ये जो म्यूटेटेड एलील्स होते हैं, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज दैट द म्यूटेटेड एलील्स कैन डू. वन इज it can produce a normal or less efficient enzyme, or it can produce a non-functional enzyme, or it cannot produce any enzyme at all. इन दोनों कंडीशन में जो डोमिनेंट एलील है रिसेसिव को कंप्लीटली डोमिनेट करेगा. बट इन दिस कंडीशन क्या होता है ये हम देखेंगे अभी नेक्स्ट एग्जांपल में, जो इज व्हिच इज कोडोमिनेंस. तो इधर क्या होता है कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमारा क्लियर है. अब हम कोडोमिनेंस की तरफ बढ़ते हैं. तो व्हाट इज कोडोमिनेंस? कि इफ द म्यूटेटेड जीन, इफ द रिसेसिव जीन, अब इसको हम रिसेसिव नहीं बोल सकते क्योंकि म्यूटेटेड जीन जो है दैट इज आल्सो एक्टिंग एज द अनमॉडिफाइड एलील. तो जो म्यूटेटेड एलील है वो भी अगर नॉर्मल एंजाइम क्या और नॉर्मल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, देन इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन हेटेरोजाइगस कंडीशन टू. फॉर एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप हम लेते हैं, तो देयर आर टू जीन्स IA
IB, sorry, 3 genes IA, IB and I in population. अब ये जो I modified gene है, it is showing the third point कि ये कोई प्रोडक्ट ही फॉर्म नहीं करता. बट ये जो IB जीन है, IA was the unmodified, it produces A antigen. एंड ये जो B modified हमारे पास एलील है, it produces a normal product, but it is different from the IA and which is B antigen. अब किसी इंडिविजुअल के अंदर अगर IA एंड IB जीन्स दोनों साथ में है, according to Mendelian genetics, what should happen? IA should dominate the IB क्योंकि ये unmodified है and ये modified है, and the person should have an A blood group, which means कि only A antigen present. लेकिन ऐसा नहीं होता. What happens instead is IA expresses itself और हमें A antigen भी दिखने को मिलता है, and IB also expresses itself and B antigen भी दिखने को मिलता है. So RBC के ऊपर हमें A and B both antigens मिल रहे हैं. So the blood group becomes AB, and this is known as codominance. In codominance में क्या होता है कि in heterozygous condition, both the alleles express itself, both the alleles express their products. और जो हमें जो product मिलता है, जो phenotype मिलता है, phenotype में we can see the expression of both the alleles. Both the alleles are dominating together. That is known as codominance. And this is the main difference between incomplete dominance and codominance. Incomplete dominance में dominant allele is not completely dominating the recessive. We need both the dominant alleles in order to produce the maximum amount of that product. But in codominance, the unmodified allele and the modified allele both are dominating together and both are expressing their phenotypes together. And this is the concept of codominance. Okay. Now ABO ब्लड ग्रुप में अब एक स्पेशल बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक मिलता है जो कि है मल्टीपल एलील की. व्हाट इज मल्टीपल एलील? सो देयर आर अब ABO ब्लड ग्रुप में जैसे मैंने बोला कि देयर आर मोर देन 2 एलील्स, IA, IB एंड स्मॉल I, 3 alleles. So as we evolved mutations way and by mutation कुछ लोगों में ये स्मॉल आई जो एलील है ये भी प्रेजेंट, ये भी हमें ऑकरेंस देखने को मिली. सो when we conduct a population study in human, we see that there are actually 3 genes that are controlling our blood group, and this concept of having more than 2 genes for more than 2 alleles for a gene is known as multiple allelism. Okay. Now in the next point, ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है NCERT में, जो कि NCERT is saying that a single gene product may produce more than one effect. So it means जो starch synthesis की gene है pea plants में, pea seed में, that is B gene. So dominant is capital B and non-dominant is small b. So if both dominants are present together, if heterozygous and if homozygous recessive, so in these 3 conditions, maximum starch production, intermediate starch production, in this condition will be least starch production. और इसका जो phenotype हमें मिलेगा that will be wrinkled seed, और इसका जो हमें मिलेगा दोनों में ही हमें मिलेगा round seed. So if we choose to examine the phenotype of shape of seed,
शेप ऑफ सीड को अगर हम एग्जामिन करते हैं तो हमें मिलता है कि ओनली टू टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स आर शोइंग, राउंड एंड रिंकल, जो कि डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस को सपोर्ट कर रहा है. बट इफ वी वांट टू सी साइज ऑफ स्टार्च ग्रैन्यूल्स, इसमें बिगेस्ट ग्रैन्यूल्स फॉर्म होते हैं, इसमें इंटरमीडिएट ग्रैन्यूल्स फॉर्म होते हैं, एंड इसमें स्मॉलेस्ट ग्रैन्यूल्स फॉर्म होते हैं. तो अगर हम द साइज ऑफ स्टार्च ग्रैन्यूल कंपेयर करना चाहे तो इट शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. और इसी चीज को एनसीईआरटी ने इस लाइन पे एक्सप्लेन करा है कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन एंड द प्रोडक्ट. It depends as much as on the gene product and the production of the particular phenotype from the byproduct as it does on the particular phenotype that we choose to examine. तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये बोल रहा है कि डोमिनेंस किसी जीन का ऑटोनोमस फीचर नहीं है. डोमिनेंस डिपेंड्स on the gene product as well as on the phenotype that we choose to examine. अगर मैं shape of seed एग्जामिन करना चाहता हूं, then I can see the law of dominance is applying perfectly. But अगर मैं size of starch granule एग्जामिन करना चाहूँ, then I can see that law of incomplete dominance is applying. तो जो ये डोमिनेंस है, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि मैं कौन सा फिनोटाइप चूज कर रहा हूँ फॉर एग्जामिनेशन. ओके, नाउ कमिंग टू द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स. टू जीन्स में क्या होता है कि इट इज सिमिलर टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस. यू कैन काउंट इट एज टू मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस टुगेदर. एंड यूजिंग द सेम लॉ, मेंडल ने डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स भी करे बिटवीन yellow round shape. I mean, he chose the color of, he chose two colors, two characters that were color of seed and shape of seed. तो इसमें दो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिया मेंडल ने, एंड ही कंटिन्यूड हिज एक्सपेरिमेंट. तो येलो ग्रीन कलर सेग्रीगेटेड इन ए 3:1 रेशियो एंड राउंड एंड रिंकल कलर सेग्रीगेटेड इन ए 3:1 रेशियो. तो मैंने जैसे बोला कि टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस आर ऑकरिंग साइमल्टेनियसली. और अगर हम इसका पुनेट स्क्वायर देखें तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा कि दिस इज राउंड एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन. So the gamete that I'm getting is RY and small ry in F1 generation, and in F1 generation all of the plants are round yellow but heterozygous. और अब F2 generation में अब सेल्फिंग कर रहे हैं, मतलब RRYY into RRYY कर रहे हैं. And if I'm making the Punnett square, we can see something like this. और इसमें phenotypic ratio हमको जो मिलता है 9:3:1. अब ये कैसे मिलता है, इसको हम अगर मैथमेटिकली एज ए रिजल्ट ऑफ टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझना चाहे तो हम कैसे करेंगे कि फॉर एग्जांपल राउंड रिंकल वन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, येलो ग्रीन अनदर मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा 3:1, इसमें रिजल्ट क्या आएगा 3:1. ठीक है, तो इफ वी सिंपली डू मल्टीप्लीकेशन वी गेट 9:3:1 बिटवीन येलो राउंड. सो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, येलो और राउंड को मल्टीप्लाई करा, येलो राउंड, येलो रिंकल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ग्रीन राउंड, फिर राउंड रिंकल. और जो हमारे पास रिजल्ट आता है 3 multiplied by 3 9, 3 multiplied by 1 3, 3 multiplied by 1 3,
and 1 multiplied by 1 1। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मैंने मल्टीप्लाई करा तो हम ये फिनोटाइपिक रेशियो तक रीच हो रहे हैं, और ये चीज एनसीईआरटी ने इधर एक्सप्लेन भी करा है। दिस so this is simple and this is dihybrid cross। और बेस्ड ऑन द डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने अपना लॉ दिया, दैट वाज मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल ने ये बोला कि इन डायहाइब्रिड क्रॉस सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। तो इधर मैंने जो बोला दो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस हो रहे हैं, these two monohybrid crosses are independent of each other, और एज ए रिजल्ट हम इसको by multiplying we can easily derive the result of a dihybrid cross। तो मेंडल ने यही बोला कि जो सेग्रीगेशन ऑफ येलो और इधर ग्रीन जीन है ना, और एंड दिस वन हैज राउंड एंड रिंकल, so segregation of yellow and green does not depend upon the segregation of round and wrinkle. These two are independent phenomena. These are happening independently and randomly, and this is the law of independent assortment। तो मेंडल के ये तीन लॉस थे, dominance, segregation and independent assortment। This was based on dihybrid cross, and these two were based on monohybrid cross, and this is the entire Mendelian genetics, this is the entire Mendelian experiment। अब इसके बाद क्या हुआ कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आया, एंड इसके बाद थोड़ा समझना इजी भी है कि 1900s में जब मेंडल्स के वर्क फिर से रीडिस्कवर हुए और इसके जो जीन्स एंड फैक्टर वाली कंसेप्ट हमें पता चली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर थोड़ा बोला गया है कि मेंडल का जो कंसेप्ट था उस टाइम पे अप्रूव क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि जो कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी बैक इन दोस डेज, और जो मेंडल की अप्रोच थी मैथमेटिक्स की यूज करने की वो अनएक्सेप्टेबल थी अकॉर्डिंग टू हिज कंटेम्पोररीज, एंड दीज वर सम ऑफ द रीजंस कि मेंडल जो उस टाइम की पॉपुलर बिलीफ थी ब्लेंडिंग, उसके अगेंस्ट जा रहा था। तो दीज वर सम ऑफ द रीजंस कि मेंडल की वर्क को उस टाइम पे पब्लिसिटी नहीं मिली। बट 1900 में तीन साइंटिस्ट लीव राइस, कोरेंस एंड शिमार्क, इन तीनों ने मेंडल की वर्क को रीडिस्कवर करा, और उसके बाद साइंटिस्ट इनको जो बाय 1900 साइंटिस्ट कुड केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन, और इनको पता था कि क्रोमोसोम्स क्या होता है। तो इसके बेसिस पे 1902 में वॉल्टर सट्टन एंड थियोडोर बोवेरी ने कुछ ऐसा देखा अपने एक्सपेरिमेंट्स में कि they saw the behavior of chromosomes were parallel to the behavior of genes। so they saw कि मेंडल ने जो जीन्स की बात करी थी और फैक्टर्स की बात करी थी और इनका जो बिहेवियर की बात करी थी ड्यूरिंग सेल डिवीजन, these were kind of similar to the behavior of chromosomes during cell division। तो इन्होंने ये पोस्टुलेट करा कि जो जीन्स है दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, और इसके साथ साथ जीन भी सेग्रीगेट होते हैं। तो दैट वाज द थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस ऑफ जीन। अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो जीन्स एंड फैक्टर्स है जो कि ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं, they are actually present on chromosomes, and the chromosomes are segregated। Chromosomes are segregated according to Mendelian law during meiosis। अब NCERT ने इधर एक टेबल दी है, इसके अकॉर्डिंग A and B, A occur in pairs, B also occurs in pairs। A segregate at the time of gamete formation such that only one of the gene pair is transmitted, or one of each pair is transmitted to a gene, to a gamete, and segregate a gamete formation, only one of the each pair is transmitted to a gamete। तो ये दोनों तो A और B दोनों के लिए सेम है, बट फॉर A NCERT ने मेंशन करा कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, और क्रोमोसोम के लिए NCERT ने मेंशन करा कि वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। तो हमें ये बोला गया डिटरमाइन करने के लिए
व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी, ए और बी में से कौन सा क्रोमोसोम है एंड कौन सा जीन है। तो इस चीज को हम अच्छे से समझ पाएंगे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज क्या होता है कि जो जीन्स है और सॉरी एलील्स है और सॉरी जीन्स ही है, जीन्स फॉर two different characters, they can be present in the same chromosome. For example, this is one chromosome, for example chromosome number 16, कोई भी रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। तो क्रोमोसोम नंबर 16 में मैं कैरेक्टर देख रहा हूँ, दो कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर इज कलर, second character is height. This is an arbitrary example, okay? तो इसको लिटरली मत लेना। तो कलर के लिए मैंने 2 जीन लिया, हाइट के लिए मैंने 2 जीन लिया। तो ये जो 2 जीन्स है ए एंड बी जीन्स, इट कैन बी प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। हियर्स द ए जीन एंड हियर्स द बी जीन। और ऐसा भी हो सकता है कैन बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। तो दिस इज क्रोमोसोम नंबर 16, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 20। तो फॉर एग्जांपल ए जीन 16 क्रोमोसोम में है और बी जीन 20 क्रोमोसोम में है। तो इफ दे आर इंडिपेंडेंट, इसको बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ जीन्स। मतलब 16 क्रोमोसोम का जो सेग्रीगेशन होगा दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन 20th क्रोमोसोम। इसका मतलब 16 क्रोमोसोम में प्रेजेंट जीन्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन 20th क्रोमोसोम। सो इसीलिए बोला कि इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इस केस में क्या होगा, A and B genes are not independent of each other. These two are present on the same chromosome. तो ये आपस में linked है। Segregation of A depends on segregation of B. तो A जिस गैमेट में जाएगा B भी उसी गैमेट में जाएगा, and that is known as linkage. तो इसीलिए हम one pair segregates independently of another pair, ये हमेशा true नहीं है जीन के लिए। क्रोमोसोम्स के लिए हमेशा true है, बट जीन्स के लिए हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट पेयर्स आर सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, एंड दैट इज व्हाई A is gene and B is chromosome. Okay. Now coming to the T.H. Morgan experiments. तो इन्होंने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट्स करा था, एंड जो लिंकेज की मैंने बात करी अभी, that concept was given by T.H. Morgan by experimenting on Drosophila. और इन्होंने सेक्स लिंकेज पे एक्सपेरिमेंट्स करा था। Why Drosophila was chosen? Because there are some some reasons जो कि MCQ में पूछे जाते हैं कि इनका साइकिल about 2 weeks का होता है, progeny flies, single mating could produce large number of flies, clear differentiation between sexes है, and many hereditary variation जो कि लो पावर्ड माइक्रोस्कोप में भी हमें देखने को मिल जाता है। So these are the reasons why Drosophila is chosen for as an experimental subject. So what is linkage? Drosophila में इसने सेक्स लिंक जीन्स पे स्टडी करा था मॉर्गन ने। So according to Mendel, the F2 जो रेशियो है that was 9331. In Morgan's experiments, that ratio deviated very significantly. और इसका रीजन यही था कि मॉर्गन जो 2 जीन्स पे काम कर रहा था, those 2 genes were linked, and he gave the term linkage based on that की physical association. It means this.
when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combinations were much higher than the non-parental type. And this is a physical association. And this physical association is known as linkage. और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? अब लिंकेज इज एक क्रोमोसोम में दो जीन है, सो दीज टू जीन्स आर लिंक्ड, लेकिन फिर भी हमें प्रोजेनी में कुछ कुछ रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप्स मिले, मतलब ये दोनों जीन्स सेपरेट हो गए. लेकिन ये कैसे हुआ? इट हैपेंड क्योंकि मियोसिस में एक प्रोसेस आता है जो कि क्रॉसिंग ओवर, एंड दिस क्रॉसिंग ओवर वाज द रीजन जिससे हमें रिकॉम्बिनेशन मिल रहा था. दिस क्रॉसिंग ओवर वाज द रीजन व्हाई these two genes got separated during meiosis in some cases. And ये दो टर्म मॉर्गन ने दिया, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का. तो अब कुछ जीन्स जो थे वेरी टाइटली लिंक्ड थे और कुछ जीन्स जो थे वेरी लूजली लिंक्ड थे. टाइटली जीन्स लिंक्ड जीन्स showed very low recombination and loosely linked genes showed very high recombination. और यहाँ पे इन्होंने कुछ डेटा भी दिया है कि 1.3% रिकॉम्बिनेशन इन टाइटली लिंक्ड जीन एंड 37.2% रिकॉम्बिनेशन इन लूजली लिंक्ड जीन. तो ये आप देख लेना. एंड स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टूटीवेंट. अब हाँ, ये जो हमें रिकॉम्बिनेशन का परसेंट मिल रहा था, बेस्ड ऑन दिस स्टूटीवेंट ने क्रोमोसोम में जीन मैपिंग स्टार्ट करा बेस्ड ऑन द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. वो जीन्स को अगर 1.3 इज द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए एंड बी जीन, देन दे विल बी दिस डिस्टेंस अपार्ट. और अगर 37.2 आर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी जीन, ए एंड सी विल बी दिस मच अपार्ट, 37.2. तो ऐसे क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की जो है मैपिंग करना स्टार्ट करा स्टूटीवेंट ने, एंड दैट इज हाउ जीन मैपिंग स्टार्टेड. और इधर ये क्रॉस दिखाया गया मॉर्गन की, जिसमें सिंपल इन्होंने बोला कि हाउ दीज टू येलो वाइट एंड दीज टू वाइट मिनिएचर, दीज टू आर लिंक्ड जीन्स, और ये कैसे आगे फर्दर प्रोसीड होता है, दैट हैज बीन शोन इन दिस. तो दिस इज क्वाइट इजी, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो आप देख लेना इस चीज को थोड़ा. एंड नाउ कमिंग टू द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. सो व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? Mendel's studies describe those traits that have distinct alternate forms, like purple or white. Mendel ने बस contrasting pairs को ही लिया, लेकिन अगर हम अपने आसपास में देखें, then there are many characters that are not that do not have contrasting traits, that have many traits that are interlinked, that are gradual, जो कि एक spectrum में चलते हैं. For example, human skin color or human height, for that matter. Human height कहा गया. For example, humans, we do not just have tall and short people, we also have a whole range of possible heights. And in skin also, we do not have whites and blacks, we have a range of all the possible color. So these kind of inheritance are known as polygenic inheritance. तो ये जो characters होते हैं that are being affected not only by one gene but more than one gene. When two or more than two genes are affecting a certain character, then this is known as polygenic inheritance. मतलब polygenic, many number of genes are affecting a single character, and these polygenic inheritance have a significant influence of environment too. और इसके अकॉर्डिंग जो भी जीन्स होंगे, सारे जो इफेक्ट्स होंगे उनके एडिटिव होंगे. मतलब डोमिनेंट, अगर सारे डोमिनेंट है, then the character will have maximum phenotype, which in case of human skin color is the darkest. और अगर सारे रिसेसिव है, it will have least phenotype, जो कि लाइटेस्ट स्किन होगा. और अगर सारे ऐसे हैं हेटेरोजाइगस है, it means
कि जो कलर होगा वो इंटरमीडिएट कलर होगा, नॉट द डार्केस्ट, नॉट द लाइटेस्ट, इट विल बी इंटरमीडिएट. So this is polygenic inheritance. Now comes the concept of pleiotropy. What is pleiotropy? Pleiotropy is instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expression. So polygenic inheritance was when multiple genes are expressing a character. But pleiotropy is single gene is expressing multiple characters. जिसका एग्जाम्पल है फिनाइलकीटोन्यूरिया. फिनाइलकीटोन्यूरिया में एक ऑटोसोमल जीन का म्यूटेशन होता है, तो जो caused by the mutation in the gene that codes for enzyme phenyl hydroxylase. तो ये जो जीन था, that gene actually controlled many characters. I mean जो ये mutated genes है, अभी this mutated gene will manifest itself through phenotypic expression characterized by mental retardation and a reduction in hair and skin pigmentation. तो ये जो mutated gene है अभी दो characters को control कर रहा है. One is mental retardation and another is reduction in hair and skin pigmentation. And this is known as pleiotropy, where one gene is controlling many characters. मतलब ये जो mutated gene in phenylketonuria है, ये control कर रहा है mental retardation को और absence of hair को and absence of pigmentation को.